अभी आप पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ गई थी एज एन ऑफिशियल स्लीप एडवाइजर। It was incredible. Sports Authority of India, Indian Olympic Association, it's a very forward-thinking initiative that they took of having a sleep advisor with the contingent first time ever. अगर आप देखें वो टीम्स जो कि पोडियम को डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो यूएसए है, वो ऑस्ट्रेलिया, वो ग्रेट ब्रिटेन है, वो चाइना है, they have realized the importance and the value of sleep. स्लीपिंग पिल्स के बारे में आपकी क्या राय है? इज नॉर्मल स्नोरिंग जो आप दूसरे कमरे तक नहीं सुन सकते, इज दैट ओके टू हैव? पेशेंट का नींद 6 घंटे से कम है और क्वालिटी ऑफ स्लीप जो पुअर है, देन दे आर मोर लाइकली टू डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सोशल इंटरेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है उन इंडिविजुअल्स में जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं या कोई अनडायग्नोस्ड या अनट्रीटेड स्लीप डिसऑर्डर होता है कि नींद जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ, वो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, डॉक्टर मोनिका शर्मा, जो कि इंडिया की पहली बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और स्लीप मोक्षा की फाउंडर हैं, जो इंडिया का पहला डेडिकेटेड बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन क्लिनिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेन यूएसए से ट्रेंड डॉक्टर मोनिका के पास 16 सालों का वैल्यूबल एक्सपीरियंस है और वो अपने काम के जरिए लोगों की ज़िंदगी बेटर नींद के साथ ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। डॉक्टर शर्मा एक एक्सपर्ट हैं जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस और रिकवरी के लिए स्लीप ऑप्टिमाइज करती हैं और स्लीप डिसऑर्डर्स वाले लोगों की मदद एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी से करती हैं। अपनी यूनिक एक्सपर्टीज़ और नॉलेज के साथ उन्होंने न सिर्फ लोगों को अच्छी नींद की इंपॉर्टेंस समझाई है, बल्कि पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इंडियन एथलीट्स के साथ भी उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मोनिका से और जानते हैं स्लीप हेल्थ के बारे में। नींद से जुड़े कुछ मिथ्स भी बर्स्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक अच्छी नींद हमारे लाइफ का गेम चेंजर हो सकती है। हेलो डॉक्टर मोनिका, वेलकम टू गुड वाइब शो। थैंक यू वंदना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल बहुत बेसिक सा है कि बहुत लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है कि एक बिहेवियरल स्लीप स्पेशलिस्ट क्या करता है, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस टू अस? या श्योर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन जो है, इसको हम बोलते हैं दैट इट इज स्टिल इन इट्स स्टेट ऑफ इन्फेंसी। एक बहुत नया फील्ड है स्लीप मेडिसिन में। स्लीप मेडिसिन इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये कोई बहुत पुराना जो फील्ड है वो नहीं है। और मेरा जो जर्नी है बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन में, वहां से शुरू अगर हम करें वंदना, सो ये ठीक कुछ 18 साल पहले, दैट इज व्हेन आई गॉट इनटू द फील्ड ऑफ स्लीप मेडिसिन। और अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है दैट मैम हाउ यू चोज बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन और कैसे स्लीप के फील्ड में आना हुआ। तो ये बहुत ही एक ऑर्गेनिक तरीके से मैं स्लीप मेडिसिन में आई। हुआ ये कि जब कुछ 18-20 साल पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी वंदना, सो आई नोटिस्ड अ ट्रेंड इन माय प्रैक्टिस which was that बाकी की स्पेशलिटी से मुझे स्लीप रिलेटेड डिस्ट्रेस से जो पेशेंट्स होते थे वो क्रॉस रेफरेंस किए जा रहे थे। एंड आई क्विकली रियलाइज दैट वो पेशेंट्स जो कि स्लीप रिलेटेड चैलेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसोम्निया है, चाहे वो हाइपरसोम्निया है, इट इज अ वेरी डेबिलिटेटिंग स्टेट टू बी इन। एंड आई रियलाइज दैट उस टाइम पर जो स्लीप मेडिसिन में कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस या ट्रीटमेंट पाथवेज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो वहां से जो मेरी जर्नी है वो स्लीप मेडिसिन में शुरू हुई। मुझे याद है उस वक्त मैंने हर स्लीप मेडिसिन की टेक्स्ट बुक खरीदी। सो आई एम्बार्क्ड ऑन दिस जर्नी। मैंने हर वर्कशॉप, हर लेक्चर, हर कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की। नेशनल जो भी हमारे इंडिया के लेवल पे जो भी स्लीप एक्सपर्ट्स उस वक्त थे, ज्यादातर न्यूरोलॉजी से हैं, उनसे मैंने केसेस डिस्कस करने शुरू किए। एंड इंटरनेशनली ऑफ कोर्स मैं पार्टिसिपेट करने लगी। हर स्लीप जर्नल जो था उसको मैंने सब्सक्राइब किया। एंड देन धीरे धीरे करके जो है, देन आई थॉट ऑफ डूइंग माय पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग इन बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन। And that is how University of Pennsylvania happened, where I did my postdoctoral fellowship, postdoctoral training in behavioral sleep medicine. और वहां से एक नाम बनना शुरू हुआ स्लीप मेडिसिन में, that there is this young, very keen, young consultant who has some training and some exposure in sleep medicine. And wahan se there was no looking back. So that is how I got into the field of sleep medicine in a very organic way.
और फिर धीरे धीरे मैंने देखा दैट क्लिनिकल काम हम लोग कर रहे थे. कुछ साल पहले आई फेल्ट द नीड ऑफ शिफ्टिंग माय फोकस फ्रॉम एंटायरली क्लिनिकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल practice, and I wanted to do more, have a more holistic approach to sleep medicine. I wanted to focus on the system. I wanted to work in high performance area as well, and that is how I developed my niche practice, wherein I help high performers, including Olympians and C-suite executives, in optimizing their sleep for recovery and performance. अमेजिंग, दिस इज सच ए यूनिक फील्ड. मतलब हमने सुना नहीं है आज तक कि कोई बिहेवियरल स्लीप स्पेशलिस्ट भी हो सकता है. सो स्लीप से रिलेटेड मेरा पहला सवाल डॉक्टर मोनिका, कि एक अच्छी नींद क्या होती है और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? जी. So, Vandana, we spend a third of our life sleeping. क्या मुझे ये कहना चाहिए? We should be spending a third of our life sleeping. So, from evolutionary standpoint से अगर हम बात करें, then it is understood that there has to be something absolutely critical going on inside of our brain and body कि इस तरह से जो है हमारे सिस्टम को डिजाइन किया गया. और आप ये बखूबी जानते हैं कि नींद जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ, वो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है. आज की डेट में अगर हम डेवलप नेशंस या डेवलपिंग नेशंस की भी लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ को देखें, बी दैट कैंसर, बी दैट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस की हम बात करें जैसे अल्जाइमर्स हो गया या डिमेंशिया हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करें, सुसाइड हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया. सो इन सारे मेडिकल कंडीशंस में नींद का एक अहम रोल है प्ले करना. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्लीप इज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दीज मेडिकल कंडीशंस. Oh my God. Now, what I also want to add, apart from physical और mental health, जो कि हम आमतौर पे समझते हैं वंदना, sleep also has a very critical role to play in our emotional regulation. In terms of our social interaction, relationship, social quotient as well. Yeah. So we have lot of studies जिसमें ये देखा गया है कि सोशल इंटरैक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है उन इंडिविजुअल्स में जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं या कोई अनडायग्नोस्ड या अनट्रीटेड स्लीप डिसऑर्डर होता है. इमोशनल ब्लंटिंग होती है, एक नेगेटिव परसेप्शन होता है, इमोशनल रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव होता है. एंड वी हैव स्टडीज सेइंग दैट such individuals have a more negative sense of humor as well. Oh my God, this is like an amazing fact. अभी तक तो हमने बस यही सुना था कि मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए स्लीप इम्पोर्टेंट है, बट दिस इज अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर दैट टॉकिंग अबाउट. So all of a sudden हमको ये देखने को मिलता है, स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड की बात करें वंदना, जो एक ब्लू आइड एम्प्लॉय होता था, ग्रुप का मेंबर होता था, राइट, सबसे लाइवली होता था, और बहुत सारे मुझे ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं जब क्लिनिक में आते हैं वो भी बताते हैं दैट ही इज नॉट द सेम गाय एनी मोर. He was witty and he had sense of humor and he used to be fun to be around. लेकिन वो धीरे धीरे करके जो है वो सारी जो अब सेंस ऑफ ह्यूमर, जो विटीनेस है, जो एक करिश्मा होता है, we have now studies telling us that sleep deprivation robs an individual of that also. So it's not just about the physical and mental well-being, but it is also how we are dealing and how we are in different spheres of life. My God, this is eye-opening fact. Thank you for sharing this, Dr. Monika. So मेरा next question इससे related ही है कि एक आम इंसान को कब ये पता चलता है कि they have some sleep disorders और उन्हें आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. How do we recognize those symptoms? Yeah. So, वंदना, insomnia is not insomnia per se. मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि जब गाड़ी का डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें एक रेड लाइट अगर ऑन हो रही है और वो ब्लिंक हो रही है, द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो रेड लाइट क्यों ब्लिंक हो रही है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो जब नींद डिस्टर्ब हो रही है, मतलब नींद आने में दिक्कत हो रही है. सो हाउ डू वी डिफाइन इंसोम्निया? प्रॉब्लम इनिशिएटिंग स्लीप. अगर नींद आने में आधे घंटे से ज्यादा लग रहा है, नींद बार बार टूट रही है, right? नींद दोबारा वापस आने में, in the middle of the night you have awakenings, what we call is broken sleep or fragmented sleep. If an individual is experiencing it for more than a month on regular basis, say 4 nights a week, so
fragmented, disturbed, broken sleep, and early morning awakening. So insomnia को हम इन 3 parts में divide करते हैं. So if anyone is experiencing these signs and these symptoms on a regular basis, accompanied by daytime dysfunctioning. So there is a level of impairment that anyone who is suffering from disturbed sleep carries during daytime. That can be physical. सिर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रही है, वो इरिटेबिलिटी के माध्यम से हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं हम, वो हो सकता है. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होते हैं, ब्रेन फॉग है, कंफ्यूजन है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. सो देयर इज अ डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट that typically anyone who's suffering from any kind of sleep disturbance carries. So daytime dysfunctioning yahan par ho gayi. And this all is happening despite having enough opportunity to sleep. So a person has blocked say 7 to 8, 9 hours of sleep, lekin delayed sleep hai, या fragmented sleep है, या सुबह आंख जल्दी खुल रही है. So these, apart from that, ये तो हो गए इंसोम्निया के symptoms. एक और बहुत strong जो indicator है of underlying sleep disorder is snoring. So loud, chronic, हैबिचुअल स्नोरिंग, और वो इतनी लाउड है कि बेड पार्टनर नहीं साथ में सो पा रहे हैं, वो इतनी लाउड है, कई दफा पेशेंट्स बताते हैं कि अपना कमरा तो नहीं पर साथ वाले कमरे में भी अगर कोई सो रहा है तो वो जाग जाते हैं, दैट द स्नोरिंग इज सो लाउड. सो ऐसे कुछ टेल टेल्स हैं, ये कुछ आमतौर पे सिम्टम्स हैं जो कि हमें पेशेंट सफरिंग फ्रॉम insomnia or apnea देखने को मिलते हैं. There are 80 different sleep disorders. So these are some of the commonly reported signs and symptoms. Yeah. Wow. So ये snoring जो है वो तो बहुत आम problem है, right? So people don't realize, people think that it's common, people snore while sleeping. So is normal snoring जो आप दूसरे कमरे तक नहीं सुन सकते, is that okay to have? Or and that's a very good question, Vandana, and I would like to point that out. Especially sleep disorders के जो diagnosis होते हैं वो बहुत delayed होते हैं. So yesterday morning I had a patient अच्छा, जो कि पिछले 10 साल से daytime sleepiness का complaint लेके डॉक्टर टू डॉक्टर जा रहे थे. She had a thick file, उनके हर टेस्ट हुए थे, लेकिन हर तरह की उनको diagnosis दिए गए, हर तरह की उनको दवाइयां दी गई, लेकिन excessive daytime sleepiness जो थी उसको diagnose नहीं किया गया. So it was a serious underlying sleep condition that female patient have. Especially delayed diagnosis and misdiagnosis are seen more in female patients as compared to male patients. okay. So diagnosis, India में most of the sleep disorders are underdiagnosed and they are undertreated. And by the time हमारे पास patient पहुंचते हैं, वो इतनी chronic condition हो चुकी होती है कि वो sleep disorder के साथ-साथ और कई physical conditions और mental conditions भी साथ में जुड़ चुकी होती हैं. Right? So yes, this is unfortunately sleep disorders are undertreated and underdiagnosed in our country, and that is because we do not have enough experts in the country. And I think awareness भी नहीं है, people ignore, like, people think Absolutely. Yes. Yeah. So one of the endeavors, at Sleep Moksha, which is the heartfelt endeavor, is the starting point really, Vandana, was to create awareness and education about this. Yeah. So बहुत misdiagnosis मैं देखती थी, अभी भी देखती हूँ अपनी practice में, that they are labeled with some sort of other psychiatric disorder, whereas the underlying condition is a sleep disorder. और मैंने ये भी देखा है कि जो existing medical conditions हैं वो worsen हो रहे हैं, वो deteriorate हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जो एक underlying contributory factor है, that is unmet biological need of sleep, that is aggravating. So patient diabetes की गोली पर है, बहुत सालों से है, लेकिन uncontrolled PP है, uncontrolled diabetes है. So जब ऐसे हमको, for example, मेरा interest जो है, research interest, वो cardiology में है. हमने एक study की 2009 से 2013 में, where I looked at sleep as a modifiable risk factor for coronary artery disease, and it was long time back. And we started this conversation around sleep as a risk factor for coronary artery disease. India mein coronary artery disease ka burden is immense. Yeah. And we were able to establish this relationship. Agar एक patient का नींद 6 घंटे से कम है और quality of sleep जो poor है, then they are more likely to develop coronary artery disease.
So normal snoring is different from जो हम स्नोरिंग एज एन इंडिकेटर लेते हैं, अंडरलाइंग जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये लाउड होती है, ये क्रॉनिक होती है। टिपिकली पेशेंट जब सुबह उठते हैं, दे विल कंप्लेन कि गला सूख रहा है, सोर थ्रोट है, बिकॉज द स्नोरिंग इज सो लाउड एंड इट इज सो क्रॉनिक। हेडेक उनमें रहता है। ऐसे पेशेंट्स को ज्यादातर हम बोलते हैं कि आपने गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि डे टाइम स्लीपीनेस जो है ये काफी महसूस करते हैं। ज्यादातर ये पेशेंट जो है वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं, बात करते हुए सो जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी झपकी आ जाती है, which can lead to, and I've seen so many patients, they have a history of motor vehicle accident. My God, yeah, obviously गाड़ी चलाते हुए सोएंगे तो एक्सीडेंट्स तो होने ही है। जी। Wow. So my next question, sleeping pills के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत लोग sleeping pills पे डिपेंड करते हैं to जी। complete their sleep, या नींद नहीं आती। इसका जी। कोई साइड इफेक्ट है, और what do you suggest, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी, देखिए स्लीपिंग मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जो कि आपके डॉक्टर, आपके जर्नल फिजिशियन या आपके स्लीप फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इंसोम्निया है और किसी को नींद आने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो दैट हेल्प्स इन स्लीप इनिशिएशन। दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्लीप, जैसे मैंने बताया कि ब्रोकन स्लीप या फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है। और जिस वक्त पेशेंट उठना चाहते हैं सुबह, वो उठ सकते हैं, बिकॉज यूजुअली इंसोम्निया पेशेंट हैव डिफिकल्टी गेटिंग अप, बिकॉज पूरी रात नींद नहीं पूरी हुई होती, सो दे हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग अप ऑन टाइम एंड रीचिंग से स्कूल और वर्क और वट एवर। सो उसको फिक्स करने में ये स्लीपिंग मेडिकेशन जो है वो हेल्प करती हैं। देर आर डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ स्लीप मेडिसिन। कुछ बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, कुछ नॉन बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। पेशेंट की क्या कोई और क्लिनिकल मेडिकल कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए, एज को ध्यान में रखते हुए, सो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जो है वो एक नींद की गोली प्रिस्क्राइब की जाती है। और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये जो गोलियां हैं वो शॉर्ट टर्म यूज के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा है कि एक बार जो गोली लिखती है वो पेशेंट सालों साल जो है वो लेते रहते हैं। सो वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बिकॉज उससे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। दूसरी बात स्लीपिंग मेडिकेशन की ये है वंदना, कि उनका काम सिर्फ तब तक सीमित नहीं रहता जब तक पेशेंट सो रहा है। डे टाइम भी उसके सिम्टम्स पेशेंट को देखने मिलते हैं। दे फील स्लीपी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, दे फील लेथार्जिक ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। चाह कर भी वो काम नहीं वो कर पाते जो वो करना चाहते हैं या जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं। सो डिपेंडेंसी इज अनदर इशू। And what, according to American Academy of Sleep Medicine, the first line of treatment, अगर हम insomnia की बात करें तो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया कहते हैं, जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कि मेरी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है। सो सबसे पहले हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पेशेंट को जो है बिना दवाइयों की हेल्प से जो है उनके इंसोम्निया के सिम्टम्स को से हम जो है उनको रिजॉल्व करें। कभी हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज करते हैं। हम गोली शुरू कर देते हैं, स्लीप मेडिसिन शुरू कर देते हैं, और साथ ही में जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके मेडिसिन को टेपर ऑफ करके द होल आइडिया इज दैट वी मेक पेशेंट इंडिपेंडेंट। उनके कुछ स्लीप हैबिट्स, उनके पैटर्न्स को जो है वो हम इम्प्रूव करते हैं। और मेरी प्रैक्टिस में 80 to 85% पेशेंट्स ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करते हैं CBT-I को, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया को। और इसके जो रिजल्ट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग है। गोली आप मान सकते हैं कि जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका तभी तक जो है वो असर रहेगा। सो CBT-I इज वेरी इफेक्टिव, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड दैट वी हैव इन स्लीप मेडिसिन, एंड दिस इज व्हाट इज recommended according to ASM. Can you explain a little bit more about CBT-I? Am I saying it correctly? सो इट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। जैसे कि मैंने बोला कि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और इसमें कॉग्निशंस और बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज जो हैं, लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज जो हैं, रिलैक्सेशन जो है, इन सब टेक्निक्स को, टूल्स को हम लोग यूज करते हैं टू रेक्टिफाई एनी अंडरलाइंग पुअर हैबिट्स, पैटर्न्स और ट्रेंड्स जो हमको पेशेंट में अनहेल्दी, फॉल्टी देखने को मिलते हैं। Okay, great. So your suggestion is कि पहले हमें natural तरीके से ठीक करना चाहिए, अगर if you have sleep disorders, and then go to a doctor, then only get a sleep medicine prescribed. Like बिना prescription तो खाना ही नहीं चाहिए, because Absolutely. कि बहुत लोग ऐसे भी खाते हैं, without. So have a discussion with so India में CBT-I या behavioral sleep medicine experts नहीं है. So I believe we would want someone to go and speak to BSM expert and see अगर फार्माकोथेरेपी की जरूरत है
या फिर हम सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से जो उनकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पेशेंट की कमिटमेंट, पेशेंट की मोटिवेशन और बहुत सारे ऐसे स्किल सेट हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं बिफोर वी सॉर्ट ऑफ रीच द डिसीजन। सो see, as a professional, my approach is that I want my patient to be well acquainted with all the treatment modalities, and then we reach a platform where we mutually agree that this is going to be the plan of action for you to resolve. And the first step, if I feel that the patient is motivated and committed enough, is that we get them started with non-pharmacological interventions rather than straight away putting them on pills. So, अब स्लीप के बारे में सिंस हमने इतनी सारी बातें कर ली कि व्हाई एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, कुछ मिथ्स हैं जो आई वांट टू क्लैरिफाई विथ यू सिंस वी हैव एन एक्सपर्ट हियर टुडे विद अस। सो पहला मिथ कि लोगों को लगता है कि हेक्टिक शेड्यूल की वजह से अगर वो वीकडेज में सो नहीं पाते ठीक से, तो दे से कि हम वीकेंड में एक्स्ट्रा सो के कवर कर लेंगे। सो इज इट ट्रू? ऐसा किया जा सकता है? डज इट वर्क? I wish it worked that way, but the answer is no. So there is some catch up that we can play over the weekend, right? But there's absolutely, we cannot completely, the sleep that you get at first place, we cannot completely get that when we play that catch up over weekends. और ये एक बहुत common trend है जो especially youngsters में हमको देखने को मिलता है, that they will be working or they will keep themselves awake for 18 hours, 20 hours at a stretch, thinking that, okay, we've got weekend to catch up. So catch up game helps, but only to an extent. You cannot fully get the benefits of sleep, which you can at first place by sleeping regularly, consistently on nightly basis. ओके, दिस इज हेल्पफुल टू नो। मेरा अगला सवाल कि बहुत लोगों को लगता है कि रात की बस 7 से 8 घंटे अगर सो लिया तो इट हेल्प्स, बट क्या स्लीपिंग ऑन टाइम इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट? लाइक रात में 10 बजे सोना और रात में 3 बजे सोना, and then you are continuously sleeping at a stretch of 7 to 8 hours. So is it okay to do that? या फिर एक टाइम शेड्यूल भी होना चाहिए? I'm afraid it's not okay to do that. So sleep timing are very, very critical, right? Even if you're sleeping for 7 to 8 hours. So there are a few things that we need to understand. थोड़ी technical है. हमारे circadian rhythms होते हैं, हमारे chronotypes होते हैं. So as long as we are sleeping according to, we are in sync with our internal clock. So जैसे एक external clock होती है, we also have internal clock. Circadian rhythms हैं, हमारे chronotypes हैं. आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं I'm more of a night owl versus early bird. So वो chronotypes होते हैं. So as long as you are sleeping and your sleep patterns and timings are in sync with your chronotype, everything is in harmony and in balance. When I say everything, a lot of critical processes like hormones release, your metabolic processes, your core body temperature, even your hunger for that matter. So as long as the timings are in sync with your number one sleep need, it is in sync with your chronotype and also your lifestyle. For example, जो night shift workers हैं, so even if they're early morning, but their job is such that they need to be awake at night and then sleeping during the daytime. उन केसेस में, उन सिनेरियोज में जो है, जो रिदम्स है वो आउट ऑफ सिंक होते हैं और वो जो एक बैलेंस है, जो हार्मनी है, वो डिस्टर्ब होती है. सो स्लीपिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग कंसिस्टेंटली, रेगुलरली ऑन टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू स्लीप हेल्थ. सो उस पर मैं डबल क्लिक करना चाहूंगी आपके इस आंसर पे कि वो जो नाइट शिफ्ट करते हैं लोग, आई अंडरस्टैंड कि उनकी जॉब ही ऐसी है, सो दे हैव टू लाइक अवेक इन द नाइट, बट वो उनका भी एक स्केड्यूल हो जाता होगा कि दे गेट यूज टू लाइक स्लीपिंग अर्ली मॉर्निंग एंड टिल आफ्टरनून. सो इज दैट ओके एज लॉन्ग एज इट्स स्केड्यूल एंड कंसिस्टेंट? Yes. Okay. So the whole idea is consistency and regularity. And we have more and more research telling us that it is not so much so about duration alone. Like you mentioned कि मैं 7-8 घंटे पूरा कर रही हूँ, पर क्या आप 10 बजे सो रहे हैं या 3 बजे सो रहे हैं, that is going to determine your health, your mental health, your physical health, your productivity, your performance, and your well-being. Yeah. Okay. So अगला सवाल मेरा थोड़ा सा, हमने ऐसा सुना है कि कुछ लोग बहुत कम घंटों के लिए सोते हैं, जैसे 3-4 घंटों के लिए सोएंगे, एंड पीपल ग्लोरीफाई दैट फैक्ट कि मेरा तो 3-4 घंटे में काम चल जाता है एंड आई फील एक्टिव थ्रू आउट द डे.
सो इज इट समथिंग कि लोगों को पता नहीं चलता कि हाउ इट्स इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ, बाद में पता चलता है कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उनके हेल्थ पे? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है वंदना, ये बहुत जो हाई परफॉर्मेंस है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां से ये सवाल बहुत आता है मेरे लिए, दैट इज देयर एनी वे दैट वी कैन गेट बाय विद 4 आवर्स ऑफ स्लीप, या फिर हम 4 घंटे में 8 घंटे के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? सो ऐसे अक्सर सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेन डजंट वर्क लाइक दैट. So the only difference is that you can make your body used to sleeping for 4 hours and then functioning, which is going to be suboptimal, low quality work in terms of your productivity and performance. Whatever you are doing, you are nowhere going to be close to your best self or your best version when you're cutting your sleep by half. So it's just that we get used to living in survival mode and not thriving. So that becomes our new normal. Right. Yeah. Okay. And a lot of people, by the time they realize, it is too late. They have a lot of other medical conditions. They have a lot of other psychological, emotional problems when they are sleeping inadequately, when they are cutting their sleep, in order to meet, say, deadlines, or doing other things and sacrificing sleep. So there is a hidden cost that they are paying for it in terms of, mostly you will see hormonal imbalance देखने को मिलता है, weight gain बहुत देखने को मिलता है, depression होता है, anxiety होता है. So there are a lot of medical issues that we get to see when they are doing it on regular basis, weeks and months and years altogether, if that is happening. और ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर मोनिका कि रात में आपको बेड टाइम के करीब एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो इज इट ट्रू? See, the reason why that is suggested is the core body temperature. When we exercise, the core body temperature goes up. राइट? और जब ब्रेन नींद का प्रोसेस इनिशिएट करता है, उसके लिए एक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है दैट द कोर बॉडी टेम्परेचर नीड्स टू ड्रॉप. So if the temperature is high, then obviously the whole process will get delayed. So that is why it is not recommended to do any vigorous, बहुत intense workout जो है वो just before bedtime नहीं recommend किया जाता. Got it. So मेरा अगला सवाल इज अबाउट एज और स्लीप के क्या रिलेशन है, लेकिन बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यू डोंट नीड दैट मेनी आवर्स ऑफ स्लीप. बच्चों को ज्यादा चाहिए होता है, टीन्स को ज्यादा चाहिए होता है. सो इज देयर अ रिलेशन बिटवीन एज एंड द नंबर ऑफ आवर्स of sleep? Yes, absolutely. So हमारी जो एज है वो वेरी करती है अक्रॉस, जो हमारी स्लीप नीड है वो वेरी करती है अक्रॉस लाइफ स्पैन. लाइक यू राइटली मेंशन कि इन्फेंट की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग है वर्सेस अ टीनेजर वर्सेस एडल्ट एंड ओल्ड एज की अगर हम बात करें. अभी आपने एक पॉइंट बोला कि ओल्ड एज में नींद की नीड उतनी नहीं रहती. सो इट इज नॉट दैट ओल्डर एडल्ट्स डोंट हैव दैट मच ऑफ स्लीप नीड. It is your brain's ability to give that kind of sleep. So as the brain ages, so there is a part of the brain, hypothalamus, उसमें suprachiasmatic nucleus होता है जो कि ब्रेन हमारी नींद की ड्यूरेशन और क्वालिटी में हेल्प करता है, मेलाटोनिन की सिक्रीशन में हेल्प करता है. सो एजिंग ब्रेन के साथ ये ब्रेन का पार्ट की फंक्शनिंग भी जो है वो इम्पेयर होती है, जिसके कारण स्लीप में चेंजेस देखने को मिलते हैं ओल्ड एज में. चेंजेस कैसे हैं? दैट द ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है और क्वालिटी जो भी है वो भी कम हो जाती है. टिपिकली ओल्ड एज में हमको 2-3 शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं. आप देखेंगे कि ओल्ड एज में जो थकावट है, टायर्डनेस है, वो अर्ली इवनिंग में आने लग जाती है. और ओल्डर एडल्ट्स दे प्रेफर स्लीपिंग अर्लियर and they also wake up a lot earlier in the morning. So इसको हम phase advance बोलते हैं. सोते भी जल्दी हैं और उठ भी जल्दी जाते हैं. Other thing that happens is that they experience frequent awakenings. So बहुत broken sleep होती है क्योंकि ज्यादातर उनकी नींद lighter stages of sleep में होती है. Deep sleep में वो नहीं जा पाते. अब ये समझने वाली बात है कि जब नींद बार बार टूट रही है, as a result of this, we will not feel fully refreshed or recharged in the morning when we wake up. And that is the reason why they feel the pinch of it all the more, because they're spending majority of their time in lighter stages of sleep rather than deep stages.
ऑल्सो अगर आप पैटर्न को देखें, क्योंकि रिटायरमेंट है, स्लीप वेक साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग अ नैप ड्यूरिंग डे टाइम. सो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हमको रात की नींद में देखने को मिलता है. ओके. एंड मेरा अगला सवाल इज रिलेशन ऑफ कैफीन एंड स्लीप. तो इज इट ट्रू कि कैफीन लेते हैं अगर आप लेट नाइट, अगर लेट इवनिंग इनटेक करते हैं चाय कॉफी, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है उससे? जी. सो देखिए, कैफीन जो है इट्स स्टिमुलेंट, हम्म. राइट? और कैफीन, कॉफी इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ कैफीन, और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस में भी आपको जो है वो कैफीन देखने को मिलता है. एंड द होल आइडिया इज दैट आई थिंक हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं वेयर स्लीप डेप्रिवेशन इज अ साइलेंट एपिडेमिक. हम लोग अपने काम में पहुंचने से पहले ही थके हुए होते हैं. Most of the patients will tell me, I hate when my morning alarm goes. I hate waking up with alarm, and फिर वो snooze की एक provision होती है, so you keep on snoozing after 5 minutes, and then you will see कि अभी आधा घंटा रह गया और आधा घंटा अब उठना ही पड़ेगा तैयार होके, बस आ जाएगी या ट्रेन निकल जाएगी. So before we reach our workplace or school, we have a big cup of coffee in our hand. Yeah. So before we even start our day, we are tired and we are fixing and we are trying to keep ourselves awake. So this is the society that we are living in. So caffeine का काम क्या है? ये stimulant है, और ये जो है एक एडेनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उसको ब्लॉक करता है. सो एडेनोसिन को जब ये ब्लॉक करता है तो वो जो ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस की फीलिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है. सो दैट इज हाउ कैफीन अफेक्ट्स आवर ब्रेन. इट क्रिएट्स अ बैरियर. सो इसकी शेल्फ लाइफ 6 to 8 आवर्स होती है. हर एक इंडिविजुअल उसको अलग तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं. सम पीपल आर हाईली सेंसिटिव टू कैफीन, एंड दैट इज द रीजन वी सजेस्ट दैट यू शुड स्टॉप एनी इनटेक ऑफ कैफीन एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स बिफोर बेड टाइम. उससे अगर आप लेट ले रहे हैं तो टिपिकली हमको ये देखने को मिलता है कि बेड टाइम जो है वो डिलेड होता है, राइट? इवन व्हेन यू आर रेडी, but because the caffeine is so much inside and it is blocking the receptor, कि इनिशिएट नहीं कर पाते, नींद डिलेड होती है, और जो नींद आती भी है वो बहुत कोई हाई क्वालिटी नींद नहीं आती. एक्सेसिव कैफीन यूज से a lot of my patients will tell me that they also have headache. Right? And if they're feeling such symptoms ki nausea ho raha hai, headache ho raha hai, nervousness ho rahi hai, then that is, and of course insomnia, those who are suffering from insomnia, unko hum nahi recommend karte ki aap caffeine jo hai wo bahut zyada le aur bahut late le, kyunki otherwise sleep delayed hai insomnia ke karan, aur caffeine ke intake ke karan sleep jo hai wo aur delayed hoti hai. So it becomes a vicious cycle for them. Yeah. So I would like to add, you asked me about caffeine, but I also want to talk about alcohol here, Vandana. So कैफीन इज स्टिमुलेंट, राइट? जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा का काम करने के लिए, अपने आप को जगाए रखने के लिए, अपने आप को अलर्ट और विजिलेंट रखने के लिए, सो दैट एटलीस्ट वी कैन फिनिश टास्क एट हैंड. Unfortunately, we're living in a society where we are very dependent on caffeine to keep ourselves awake, and we are dependent on alcohol, which is the sedative, to sleep. So a lot of people, when they come and they see me, a lot of them are using alcohol as a sleep aid. कि मैम नाइट कैप 1-2 ड्रिंक लिया और फिर नींद आ जाती है, और क्योंकि ये सेडेटिव है, सो अल्कोहल के इंटेक के साथ स्लीप इनिशिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, नींद आ जाती है. द प्रॉब्लम इज नींद टूटती है बार बार, again because of its effect on central nervous system, and the quality of sleep is very poor because your brain is coming in and out of light stages of sleep. Deep stages of sleep में alcohol brain को नहीं जाने देती. REM जो stage of sleep है उसमें भी alcohol है जो वो नहीं जाने देती. So even if you are getting 4 to 5 hours of sleep by using alcohol as a sleep aid, especially insomniacs में हमको ये देखने को मिलता है, the quality of the sleep that you're having is very poor, and you still end up waking up feeling unrefreshed and tired. कि लोगों ने खुद के सॉल्यूशंस निकाले हैं, अल्कोहल पीकर सो जाओ. जी. So it is used as a sedative. So if someone is not taking a sleeping pill, self medication नहीं है, so alcohol के माध्यम से जो है वो अपने आप को वो they are trying to fix the problem. Yeah, right.
So my next question is, I have heard a lot that, women needs more sleep than men. So is it true कि men और women के sleep के needs different होते हैं? So, Vandana, childhood में there are no sleep differences when it comes, boys and girls में हमको कोई sleep patterns में या needs में differences नहीं देखने को मिलते. लेकिन first menstrual cycle के साथ, puberty के साथ जो है, हमको sleep में changes दिखने लग जाते हैं in females, right? And more so, second जो half of the menstrual cycle होता है, उसमें progesterone levels जो है वो high हो जाते हैं, core body temperature भी high होता है. So ज्यादातर हमको sleep related problems उस टाइम पे देखने को मिलते हैं. या तो स्लीप डिस्टर्ब होती है, डिलेड होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज टिपिकली दैट वी गेट टू सी इन फीमेल पेशेंट्स अराउंड देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. पीएमएस में भी जो है वो बहुत सारी स्लीप के डिस्टर्बेंसेस अक्सर पेशेंट्स हमें आके बताते हैं. हार्मोन्स का एक बहुत अहम रोल है यहाँ पे प्ले करने के लिए फीमेल फिजियोलॉजी में. और अक्रॉस द लाइफ स्पैन अगर आप बात करें तो वो प्यूबर्टी से शुरू होके प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जो है वो स्लीप में चेंजेस आते हैं. प्रेगनेंसी में भी हमको स्लीप के डिसऑर्डर्स, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं. इंसोम्निया देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया देखने को मिलता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. दीज आर कॉमन स्लीप प्रॉब्लम्स दैट वी गेट टू सी during pregnancy, but again unfortunately I will say they go underdiagnosed. और कई बार क्योंकि ये अंडर ट्रीटेड होती हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हमको प्री टर्म लेबर या फिर जो है वो अनमैनेज हाई बीपी के रूप में देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है वो सी सेक्शन या इमरजेंसी जो सर्जरी है उसमें पेशेंट को जाना पड़ता है. सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमको प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग अंडर ट्रीटेड स्लीप डिसऑर्डर के कारण भी देखने को मिलता है. इसी तरीके से पोस्ट डिलीवरी, बिकॉज मदर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर है, चाहे वो फीडिंग है थ्रू आउट, सो उस टाइम पे जो है वो स्लीप डेप्रिवेशन दे हैव टू गो थ्रू. फिर पेरीमेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज भी फेज है जिसमें कि काफी स्लीप चैलेंजेस जो है वो फीमेल पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं. एंड फीमेल्स आर थ्राइस एज लाइकली टू हैव स्लीप डिस्टर्बेंस एज कंपेयर्ड टू मेन. So is it fair to say कि females में ज़्यादा biological changes होते हैं that Absolutely, because of the hormonal changes, yes. Okay. That they have to go through, different stages of life, that their sleep need, the quality of the sleep is impacted. Great. Thank you. This was a great conversation, Dr. Monika. Very, very insightful. And thank you for breaking all the myths and misconceptions ताकि लोगों को सही चीजें पता चल सके. So now I want to talk about your professional achievements. अभी आप पेरिस 2024 Olympics में इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ गई थी as an official sleep advisor. So how was the experience? It was incredible, and I love the momentum right now in our country because Sports Authority of India or Indian Olympic Association, it's a very forward-thinking initiative that they took of having a sleep advisor with the contingent, first time ever. So 120 athletes along with their supporting staff. And it was, we had a lot of takeaways from it. And सबसे बड़ा जो है that this is we need sleep for recovery. We need our athletes to be fully recovered. We want them to have sustained high performance. So sleep is absolutely critical. So it's not just about creating awareness about the importance of sleep and recovery and high performance, but it is also leaving them with those powerful tools and techniques. So in my sleep optimizing programs, what I do with high performers is that I specifically design those techniques and tools for them where they optimize sleep. So one is normal sleeping, कि हम 6 से 7 घंटे सो रहे हैं. So maybe for a non-athlete or normal individual like you and me, where reaction time does not matter so much, it works, right? But when you're competing at the highest level, so with 8 hours of sleep, typically the reaction time is about quarter of a second. But when we are sleeping for less than 6 hours, it doubles or triples. So it goes up by 300%. So this is not something that an athlete can afford to have when they are
competing at the highest level, right? So things like reaction time, accuracy, speed, decision making, these are all important critical aspect of peak performance. And we know that sleep plays an absolutely critical aspect in sharpening these skills, right? So it was very gratifying and very exciting to be with the contingent and help them to recover and help them in optimizing their sleep for recovery and peak performance. Amazing. And this is also great that अभी sleep को लेकर इतनी awareness फैल रही है, because हमने तो यही सुना था आज तक athletes के performance के लिए people were focusing on their training, their nutrition, but nobody used to talk about how sleep is also important. So Absolutely. amazing. So it is time, and when we talk about best practice, वंदना, अगर आप देखें वो teams जो कि पोडियम को dominate कर रही हैं, चाहे वो USA है, वो ऑस्ट्रेलिया, वो ग्रेट ब्रिटेन है, वो चाइना है, they have realized the importance and the value of sleep. So वो sleep को उसी तरीके से prioritize कर रहे हैं जैसे वो अपनी technical, tactical training और nutrition को prioritize कर रहे हैं. Sleep is a part of their training, just like any other training that they are doing. Yeah. So yes, so sleep is absolutely critical. If you are someone who has that competitive edge, वो चाहे आप corporate world में है, चाहे आप high performer है, चाहे आप student है, so if you have that, then sleep is one thing which can give you that competitive edge. Yeah, so true. And now I would like to talk about your clinic, Sleep Moksha, जो इंडिया का पहला behavioral sleep medicine clinic है. So what are its objective and mission? So we've talked a little bit about it, how the whole idea of Sleep Moksha was conceived. It was, when I realized that, I need to have a more, patient advocacy, of course, is something that is very dear to me. But apart from that, having a system in place where we have a more holistic approach to well-being, right? And sleep, I saw, is a missing piece of the puzzle when it comes to physical and mental well-being. So it was very, very important for someone to step out, educate, because see, the ignorance about sleep is quite profound in our society. There are a lot of myths and there's a lot of also misinformation, right? So sleep right now is the hot topic, and बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोज ही तो कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं, so anybody can go and talk about sleep, right? But it's there's a whole science and art to sleep. So with all this, the idea of Sleep Moksha was conceived, and we have different clinics now. We are helping not just the clinical population. I have a special clinic for sleep for women's health. We also help first-time young parents to sleep train their infants. Oh, wow. Then, of course, yeah, we have a high-performance clinic. And as I mentioned, that there are 80 different sleep disorders, and we are doing the diagnosis. And the approach really here, as I mentioned earlier also, is to identify that red light which is blinking on the dashboard. So the approach is to identify the root cause of sleep problem. Someone is facing a sleep challenge, unko neend nahi aa rahi hai, neend zyada aa rahi hai. The idea is not that we resolve the symptom. The idea is that we get to the root cause. We understand, right? If there is a pain, we need to understand why is that pain that you're experiencing, where is that pain coming from, right? Rather than simply giving analgesic it or usko humne khatam kar diya. So the whole idea was that we need to identify the root cause and treat the root cause rather than symptoms, what we call as dustbin medication. So ye approach leke jo hai wo Sleep Moksha ko हमने launch किया, और God has been very kind, and we developed this niche practice also. So we have sleep optimizing programs, and it is very gratifying to see that we started this conversation a few years back, and it is taking some shape, and but we have a long way to go. Yeah. So yes, No, it's but quite thanks exciting. to you, Dr. Monika, we need more and more people like you who can spread awareness about sleep health. बहुत ज़रूरत है इसकी. People are not aware how it's important to have a good sleep. Yes. Yeah. Okay. And you talked about, training the newborns and helping parents to establish like a sleep schedule. I'm sure Yeah. ऐसे बहुत parents आते होंगे आपके लिए भी, क्योंकि ये तो बहुत common problem है.
Yes. I think, and Vandana, that was the point when my husband thanked, and he was like, "Oh, it's good to have a sleep advisor as a wife because we were sorted, you know." So that was the time when was जो सारी knowledge. I had one training at CHOP, which is Children's Hospital of Philadelphia, at Pennsylvania. Philadelphia, I had this one posting in pediatric sleep medicine, and so when I was expecting my son, that was the time, to translate all that learning. So, and I Like realized that checking yes, it everything works. on yourself, right? On your Yes, Did it work? Did it work? yes. Of course, yes, Wow. yes. Awesome. He was sleep trained. Yeah. Okay. Okay. So, what you're doing is such a unique thing, Dr. Monica. I want to know, like, if you have any suggestion or advice for people who are interested in making a career in sleep medicine. How can they do that? See, in the US, there are now a lot of workshops, there are a lot of seminars. I know, I'm aware. University of Pennsylvania, time and again, it opens up CBT-I courses जो हैं. Dr. Michael Perlis हैं, Dr. Phil German हैं, तो उनके साथ ऑब्जर्वरशिप ली जा सकती है, फेलोशिप पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे हो रही है. So there are a lot of opportunities, at least in the US and also in Australia. So if anybody is interested, that these are some good places to look out for and write to them. Mostly profs out there are open to the idea of if they have a vacancy, but हाँ अभी बहुत opportunities हैं इस field में training लेने के लिए. ऐसा कोई specialized course नहीं है, like, you can enter a college and study in India. So because it's a fellowship, it's a niche practice. So it's a specialized training. Yeah, it's a specialized training. Okay. Yeah, I hope कि धीरे धीरे time के साथ it will become more common, like, people will start studying about it. Yes, I hope so too. Yeah. Okay, so चलते चलते Dr. Monica, any quick tips you want to share with our viewers ताकि वो एक अच्छी नींद ले सकें, कुछ do's and don'ts? Yeah, so हमने बहुत सारी चीजों की बात की. क्विकली अगर हम रिकैप करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको स्लीप को कंसिस्टेंटली रेगुलरिटी की जो है उसकी तरफ ध्यान रखना है. अगर मैं बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वेकअप के लिए अलार्म, आपने आमतौर पे देखा है लोग लगाते हैं वेकअप अलार्म. व्हाट आई सजेस्ट इज हैव अ बेड टाइम अलार्म, right? And you have to create that sleep window for yourself. Block those 7 to 8 hours of sleep, no matter what, on regular basis. So sleep is not something that should be prioritized or kept only for the weekend, right? This is something that you need to consistently, regularly prioritize night after night. And if you are someone who is like me, who believes in leading a more happier, healthier and fulfilling life, then sleep is your starting point. Once you sort your sleep, once the sleep is on track, I promise you all other important aspects of your life, whether they are professional or they are personal, slowly and gradually they will all fall in track. सो कैफेन और अल्कोहल की हमने बात की है. कैफेन का इंटेक जो है वो 6 to 8 आवर्स आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. अल्कोहल का इंटेक भी जो है वी से 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम. Apart from that, smoking cessation, because that is also a stimulant. उसके अलावा स्पाइसी हैवी मील्स राइट बिफोर बेड टाइम. सो खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का जो है वो गैप होना चाहिए. अगर कोई रात की नींद के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो दिन के टाइम में नैप आप अवॉइड करें. इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड यू are sleep deficient, then try considering nap during the daytime. It's little technical for how long and when is something that we discuss with our patients. But yeah, these are some of the starting points when it comes to improving your sleep health. Amazing. These are amazing tips. And thank you so much for sharing so much information with our viewers. काफी नई चीजें जानने को मिली आज आपके साथ बात करके. And thank you for coming to our show. It was great talking to you, Dr. Monica. We wish you all the best. Thank you, Vandana. Thanks for having me. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आई होप आपको नींद और वेल बीइंग के बारे में नई इंसाइट्स मिली होंगी. अगर आप भी अपने स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चेंजेस से स्टार्ट करें और देखें कैसे आपकी हेल्थ और मूड पर फ़र्क पड़ता है. इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए क्योंकि अच्छी नींद की नॉलेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द गुड वाइब शो.